He may be in the dock over a spate of unpaid loans totaling a whopping $7,600 crore, but former director of the now defunct Kingfisher Airlines Vijay Mallya has displayed no sign of remorse whatsoever. 2 days ago, Mallya issued a statement dismissing allegations of being a willful defaulter, saying he was in the process of arriving at a one-time settlement with banks over his dues. He had also charged banks and the media for sullying his image, saying that banks which are already reeling under a spate of bad loans were projecting him as the poster boy of NPAs, non-performing assets or bad loans. However, the justifications by the flamboyant business tycoon have found few takers among his former employees at Kingfisher Airlines who have been battling for payment of their salary dues. Women employees of the airline have now written an open letter to Mallya, castigating him for his high-handedness. Here is the full text of the letter. Dear Mr. Mallya, we the women employees of Kingfisher are forced to write this letter to call your bluff as a response to your media release recently, which as usual had nothing about us. Exploitation is in your blood, that's why you are talking about one-time settlement with only banks and not the employees. Why? Because we are weak and vulnerable due to our system? Coincidentally, today being Women's Day, we feel pain that our colleague's wife who committed suicide didn't get justice. Delhi police didn't even register FIR against you. You said you are fully cooperating with the agencies, then why in the first place you placed legal hurdles in the path of recovery by the banks, which were following due legal process to recover the debt amount? You evaded the recovery process, then what are you other than absconder? Due to our curse you are facing humiliation daily. You say you are targeted and there are bigger defaulters against whom no action has been taken. You may be right, but those people at least didn't exploit their employees. However, why don't you talk about very small borrowers who are targeted by banks while hands in glove with corrupts like you? Before hiding behind limited liability clause, please remember laws are not made to be misused, and if you are such a law-abiding citizen, then follow them in totality, not according to your convenience. Whom you suggest that we should ask our dues from the shareholders who are almost ruined by you. Your intentions were never good, that's why you never appointed CEO until it was very late. You not only killed Edicon, which Ambani's would have otherwise taken over, but also our mother Kingfisher Airlines, which was feeding us. You should have gracefully exited like Captain Gopinath did when he was not able to manage the airline. You say that you are not a defaulter, but you confidently told us during the meeting that banks won't be able to recover more than 5 to 10% of debt amount. That speaks volumes of your malicious intentions. In the same meeting you promised revival, payment of our salary, and pleaded in the name of God to stop our agitation against you, as you said people were boycotting you like a leper. Do you ever realize the money you have gulped is paid as tax by a person earning as low as 2.5 lakhs per annum? Your personal security Kingfisher Villa is taken over by banks. We still wonder why you should not be treated as undischarged insolvent and be debarred from the RS. You say you are an NRI, then why are you member of Rajya Sabha when you are out of India most of the time? What are your contributions as a member of RS other than asking for immunity, and how you got elected also need to be answered. You have track record of not paying even IPL players. When we protested before RCB, Virat Kohli tweeted today, Kingfisher Airlines employees booed me for their salary, but whom should I boo to get my salary? He later on deleted that tweet. At least, he expressed his helplessness and also that he was your victim as well, unlike Yuvraj, who remained indifferent to our appeal. You paid and compensated foreign employees for fear of their strict laws. That exposes your double standards and the respect you have for our nation and its law, so unbecoming of a member of parliament. Our Prime Minister Shri Narendra Modi should take note of our toothless laws, so that no one suffers in future like we did. This clearly means that you had no intention of reviving the airline while you kept submitting misleading revival plans to banks or DGCA. Mr. Ajit Singh, then Civil Aviation Minister, was hands in glove with you.
We appeal to our Prime Minister to take very serious view of this and remove you from the committee of RS, if not from the membership. People those who have joined new company are not able to get tax refund as IT department is adjusting it against the income tax due in our account which was not submitted by you. We request our finance minister to resolve this issue. You kept depositing PF but not salary again due to fear of action against you. You have even issued us tax sheet, in lieu of Form 16, for the full year 12-13 but have paid us only till June 2012. You are indifferent to us but we feel pity on you for what you have done to yourself and your empire. We don't feel happy to insult you but our contention is that why you kept us in dark. You should have immediately paid us when the first life was lost but instead, you used us as human shield to prolong your legal battle. We want to end this letter with a positive note that there are numerous businessmen who have donated their wealth to charity. You at least pay us our rightful dues. Wishing for your speedy recovery. Women employees, Kingfisher Airlines. कंपनी तो बढ़िया कंपनी में था क्योंकि मैं तो किंगफिशर में ज्वाइन नहीं किया था मगर मैंने एयर डेकन का था। आफ्टर मार्जिंग 2000 एंड दिसंबर किंगफिशर का एम्प्लॉय हो गया था। मगर कंपनी ऐसे कंपनी इंडियन एविएशन में शायद कभी आया नहीं और आएगा भी नहीं। मगर क्या हुआ ना, ये कंपनी जानबूझ के या पता नहीं कंपनी का मलिया का कुछ प्रॉब्लम के वजह से धीरे धीरे वो लोग हम लोगों का सैलरी डिले करना चालू कर दिया। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जैसे 4 मंथ जब से डिले सैलरी चालू हो गया था तब से एम्प्लॉय लोग स्ट्राइक करना चालू कर दिया। मैनेजमेंट के साथ बहुत बार बैठा था हम लोगों ने मगर उन लोगों ने कुछ आंसर दिया नहीं। हर महीना सैलरी नहीं मिलता था, अगर मिलता भी था तो 15-20 दिन डिले पे मिलता था। तो अल्टीमेटली 2012 दिसंबर फाइनल स्ट्राइक हो गया था बॉम्बे में। उसके बाद से कंपनी का एओपी सस्पेंडेड था। तो उसके बाद भी सब लोगों का भरोसा था कंपनी सरवाइव करेगा, इन्वेस्टर आएगा, हम लोगों को भी ऐसा समझा गया मगर अल्टीमेटली कुछ हुआ नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं मिला। मैंने तो 2013 जुलाई में रिजाइन किया। अभी तक मेरा ऑलमोस्ट 1 ईयर सैलरी पेंडिंग है और मेरे जैसे ऐसे कम से कम 1,500 से 2,000 एम्प्लॉय रहेगा, उनमें से कम 1,000 तो इंजीनियरिंग का ही रहेगा जिनको सैलरी मिला नहीं। अभी हम लोग ये लेके किसके पास जाए? मैंने पीएम नरेंद्र मोदी जी के पास भी मेल भेजा था। सर ने मुझे 6 मंथ बाद रिप्लाई भेजा था। जो मेरा जो मैटर है मैंने मेरा फुल डिटेल्स के साथ भेजा था। उन्होंने मेरे को रिप्लाई दिया था जो ये मैटर उन्होंने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड किया। आफ्टर 2 मंथ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री मेरे पास रिप्लाई भेज रहा है, ये प्राइवेट कंपनी है तुम्हारा, हम कुछ नहीं कर सकते, तुम कंज्यूमर फोरम में जाओ। अभी बात यह है मेरा जो 1 साल का जो पेंडिंग सैलरी है लगभग 4 to 5 लाख जो है, उसके साथ ग्रेचुइटी भी है, तो ये पैसा कौन देगा? प्रॉब्लम हो रहा है हमारा, हो रहा है जो एक्स किंगफिशर एम्प्लॉय है उनका हो रहा है। मगर मलिया जी का क्या प्रॉब्लम हो रहा है? उनको वीजा मिल रहा है कोई भी कंट्री में जाने के लिए, उसको पासपोर्ट का रिन्यूअल मिल रहा है, मगर ये काम अगर हमने करता तो हमारा क्या मिलता? यही मेरे को बोलना है। हमको गवर्नमेंट से प्रॉपर जस्टिफिकेशन चाहिए और उसका अगेंस्ट में स्टेप भी लेना चाहिए। बड़ा शायद इसीलिए बना ताकि वो ऐसा कुछ भी करे जिससे कि वो जनता को और गवर्नमेंट एजेंसीज को, टैक्स पेयर्स को, टैक्स एजेंसीज को, किसी को भी अपने तरीके से उल्लू बना सके। इसी वजह से मुझे लगता है कि उसने उसी बेसिस पे जो है किंगफिशर एयरलाइंस खोली थी। उसका मेन बिजनेस तो शराब का था। शराब का बिजनेस का आप पब्लिसिटी कर नहीं सकते हो, तो शायद इसने सोचा कि चलो एयरलाइन खोलते हैं। वो हमेशा बोलते थे मेरा पैशन है एयरलाइन खोलने का। प्रोडक्ट तो उन्होंने बहुत अच्छा बनाया था, पर उसके बाद में जो उनका माइंड डाइवर्ट हो गया, उन्होंने वो फार्मूला 1 टीम ले ली, आईपीएल टीम ले ली, और ये सारा मेरे हिसाब से जो पैसा ये बैंक से उठा रहे थे किंगफिशर के नाम पे या एयरलाइन चलाने के नाम पे, वो सारा पैसा इधर उधर डाइवर्ट हो रहा था। एयरलाइन के फ्लाइट, हम एयरलाइन के एम्प्लॉई थे तो हमें पता है कि एयरलाइन के फ्लाइट जो थे वो बहुत अच्छा लोड जाता था, बहुत अच्छे पैसेंजर का जो था लोड था फ्लाइट्स के अंदर। मगर वो किसी को फ्री तो नहीं दे रहे थे, ऑब्वियसली वो पैसा आ रहा था कहीं से।
बट वो पैसा वापस एयरलाइन में नहीं जा रहा था, वो ऐसे कुछ अलग अलग अपनी अय्याशी के कामों में जा रहा था। और इसकी वजह से लोगों को पैसे नहीं देना, जो वेंडर्स थे उनको पैसे नहीं देना, ट्रांसपोर्ट वाले को पैसे नहीं देना, उसके बाद में जो एयरक्राफ्ट कंपनीज, लीजिंग कंपनीज थी उनका पैसा नहीं दिया, ऑयल कंपनीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है उनका किसी का ऑयल पैसा नहीं दिया, उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी वगैरह जो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स है उनका पैसा नहीं देना। उसके बाद लोगों ने इनको कैश एंड कैरी पे डाला। आई मीन आप सवेरे पैसा जमा करो और उसके बाद में आपको जो है सर्विस मिलेगी। तो इस लेवल पे आने के बावजूद इस आदमी की जो अय्याशी थी वो कहीं भी कोई भी नजर में कम नहीं हो रही थी। बहुत सारी बातें, बहुत सारे हमारे लोगों ने इतना सहा है कि मुझे डेफिनेटली लगता है कि विजय मल्ल्या जी को उनका बहुत बड़ा शाप लगता होगा कि आज जो विजय मल्ल्या जी, देखिए इस दुनिया में आपको सब कुछ हिसाब करके जाना पड़ता है। तो शायद अभी वक्त आ रहा है, आप मीडिया वालों का बहुत बहुत मैं आभारी हूं कि आप लोगों ने इस टाइप के जो आदमी हैं जिनको दुनिया की कोई परवाह नहीं है और दुनिया के पैसे के ऊपर जो अपनी अय्याशी करते हैं और फिर वो पैसा नहीं लौटाना, वो कितना बड़ा जुर्म है वो हो सकता है अभी उनके ध्यान में आता होगा। लेकिन शायद ये जो गवर्नमेंट बैंक है इनका एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 100% होगा, क्योंकि उन्होंने कौन से बिना पे इतने सारे लोन देते गए विजय माल्या को। उसके सारे जो जहाज थे वो सारे रेंट पे लाए थे, लीज पे थे, उसकी सारी जो जगह थी वो सारी लीज पे थे। किंगफिशर हाउस अगर छोड़ा या किंगफिशर विला छोड़ा तो बाकी मोस्टली सारी चीजें जो थी वो सब रेंट पे थी। तो ऐसे रेंटल बेसिस पे यू नो कैसे आई मीन या तो उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर होगा या तो फिर उनको ब्राइब किया गया होगा। तो उस बेसिस पे ये सारी बैंक्स ने जो है, आज अगर मैं लोन के लिए अप्लाई करता हूं या आप करते हो तो हमारी कितनी सारी वेरिफिकेशन होती है, हमारा फिजिकल एड्रेस चेक किया जाता है, सारी डॉक्यूमेंटेशन चेक होते हैं। मगर ऐसा विजय मल्ल्या के साथ कुछ हुआ नहीं। लगता है उसकी जो लार्जर देन लाइफ इमेज थी वो अपनी इमेज के ऊपर सारी बैंकों से पैसा उठाया उसने, जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, लोगों का पैसा है। और अभी बस उनको शायद ऐसा लगता है कि ये पैसा लोगों ने मेरे लिए काम करके कमाया था ताकि मैं उसको खर्चा कर सकूं। तो मेरे हिसाब से ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है और उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को 100% विजय माल्या को उसके लिए अकाउंटेबल पकड़ना जरूरी है, ताकि समाज में एक बहुत स्ट्रांग मैसेज जाए और लोग ऐसे लोगों का पैसा अपनी अय्याशी के लिए यूज करने का बंद करें। लोगों के लाइफ के साथ में, एम्प्लॉयज के लाइफ के साथ में जो है ऐसे टाइप के इंडस्ट्रियलिस्ट खेलना बंद करें। ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है और उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को 100% विजय माल्या को उसके लिए अकाउंटेबल पकड़ना जरूरी है, ताकि समाज में एक बहुत स्ट्रांग मैसेज जाए और लोग ऐसे लोगों का पैसा अपनी अय्याशी के लिए यूज करने का बंद करें। लोगों के लाइफ के साथ में, एम्प्लॉयज के लाइफ के साथ में जो है ऐसे टाइप के इंडस्ट्रियलिस्ट खेलना बंद करें। He may be in the dock over a spate of unpaid loans totaling a whopping $7,600 crore, but former director of the now defunct open letter to Mallya, castigating him for his high-handedness. Here is the full text of the letter. Dear Mr. Mallya, we the women employees of Kingfisher are forced to write this letter to call your bluff as a response to your media release recently, which as usual had nothing about us. Exploitation is in your blood, that's why you are talking about one-time settlement with only banks and not the employees. Why? Because we are weak and vulnerable due to our system? Coincidentally, today being Women's Day, we feel pain that our colleague's wife who committed suicide didn't get justice.
Delhi police didn't even register FIR against you. You said you are fully cooperating with the agencies, then why in the first place Kingfisher Airlines Vijay Mallya has displayed no sign of remorse whatsoever? 2 days ago, Mallya issued a statement dismissing allegations of being a willful defaulter, saying he was in the process of arriving at a one-time settlement with banks over his dues. He had also charged banks and the media for sullying his image, saying that banks which are already reeling under a spate of bad loans were projecting him as the poster boy of NPAs, non-performing assets or bad loans. However, the justifications by the flamboyant business tycoon have found few takers among his former employees at Kingfisher Airlines who have been battling for payment of their salary dues. Women employees of the airline have now written an